Hi class. So today we are going to actually write essay in our class. Until now, whatever we have seen, introduction, conclusion, body, different approaches to body. Today we are going to actually apply that whatever we have read in this actual essay writing. So whenever we start essay writing, there are three steps. The first step is what? In the first step, you have to write whatever keywords that is coming into your mind. Second step, arrange the keywords in particular paragraph. And third, start writing the essay. क्या करना है आपको? कोई भी ऐसे टॉपिक मिला तो पहले के 3 से 5 मिनट में उस ऐसे टॉपिक के बारे में जितनी चीजें आपके दिमाग में आती है, जितना कुछ आपके माइंड में आ रहा है, जितने कीवर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उन सारे कीवर्ड्स को एक एक करके आपको जो है एक रफ ड्राफ्ट में लिख लेना है। सेकेंड पार्ट में जो कीवर्ड्स है उनको अरेंज करना है, किस कीवर्ड को कहां पर रखेंगे, और थर्ड पार्ट में ऐसे लिखना आपको स्टार्ट करना है। एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल देयर इज एन ऐसे टॉपिक पंचायत, चैलेंजेस ऑफ पंचायत, फ्यूचर ऑफ पंचायत, ओके, पंचायत, गवर्नमेंट इन इंडिया, वॉट एवर दैट इज। सो द कीवर्ड इज पंचायत। सो पंचायत वर्ड देखते ही जो भी दिमाग में आना चालू होता है उसको वहां पर लिखना चालू करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ पंचायत दिमाग में आया, लिख लिया। और 73rd अमेंडमेंट, रिजर्वेशन इन पंचायत तुरंत लिख लिया वहां पर। कमिटीज ऑफ पंचायत, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, उसको लिख लिया। पैसा दिमाग में आया, पैसा लिख लिया। चैलेंजेस ऑफ पंचायत लिख लिया, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, फिनेंस की कमी है। जो चीजें माइंड में पंचायत के बारे आए उस चीज को एक की हम क्या करेंगे, कीवर्ड एक जगह पे लिख लेंगे। उसके बाद सेकेंड फेज में क्या करेंगे, उसको अरेंज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले को एक तरफ अलग करो, कॉन्टेम्प्ररी को एक तरफ अलग करो, हिस्टोरिकल जेनेसिस और हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ पंचायत उसको एक तरफ अलग करो, उसके बाद चैलेंजेस ऑफ पंचायत उसको एक तरफ अलग करो। यानी कीवर्ड्स पहले बनाना है और हर कीवर्ड्स को सेकेंड स्टेप में डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में रखना है, और थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। दैट इज द ओनली वे टू राइट essay. So let's write an essay. With greater power comes greater responsibility. This is the topic of our essay and we have to write this essay. So recall the first class when I told you that it is very important first to understand the essay, the main central theme of essay. So there are two terms in this word. First is power and second is responsibility. So this essay is on power or on responsibility. You have to take that very seriously. So this topic is basically on power and we have to extend the concept of power on responsibility. आपको लिखना पावर के ऊपर में ही है, पर पावर को रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपको क्या करना है, जोड़ देना है। दैट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो रिकॉल द फर्स्ट क्लास, essay must be written as per demand of the question. सो क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं कि आपको पावर पे लिखना है, बट क्वेश्चन की डिमांड है कनेक्ट दैट पावर विथ अ टर्म दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो अब इस essay को किस मेथड से हम लिख सकते हैं, व्हाट इज द मेथड विच आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर essay. एज आई टोल्ड यू देर आर डिफरेंट अप्रोचेस, बहुत अलग अलग अप्रोचेस हैं और किसी भी एक अप्रोच से हम इस essay को जो है कंप्लीट कर सकते हैं. पहला अप्रोच उठाते हैं. मान लीजिए पहला अप्रोच क्या था हमारा, दैट वी कैन राइट essay फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस. ऑलराइट, सो लेट अस think how we can write this essay from different dimension. So power, okay, political dimension. So politicians, they are powerful. This is political dimension. Political parties, they are also powerful. The people who have some kind of relationship with politicians, political party, they are also powerful. Political angle. Constitutional angle. Constitution has divided power in different verticals. Constitution has given authority, power to Prime Minister, President. Okay. Sociological angle of this power. So people who have some kind of support from society, they are also powerful. Community leader, caste leader, religious leader, they all are powerful. Sociological interpretation. Economic interpretation. बिजनेसमैन पावरफुल होते हैं. बिजनेसमैन जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे. इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ पावर. सो इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल जुडिशरी, दे ऑल आर व्हाट, पावरफुल.
Geographical definition, how come geographical definition? So जिन लोगों के पास में नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो पावरफुल है, वो पावर एंजॉय कर रहे हैं, वहां से पावर ड्रॉ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस से. Ethical interpretation, so power should not be misused. We should not use power for fall means or to exploit other people. Technological interpretation, so anyone who has command over technology has power. So doctor is powerful, he enjoys power in the society, in the patient. Why? Because he know how to use technology. US is powerful because of technology only. Germany is powerful because of technology. Japan is powerful because of technology. So we can analyze power from different angle: political, constitutional, legal angle, also we could geographical, technological, ethical, international, psychological also we can use. So what is psychological? So male domination, this thinking of male domination, this is what? Psychological theory of power. So we can see that we can solve this essay very easily from our first approach. Let us apply second approach. एनालाइज द एसे फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल मैनर, इवोल्यूशन के टर्म्स में. पहले पावर का मतलब क्या था? ट्रेडिशनल डेफिनेशन. कौन पावरफुल होगा? जिसके पास स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है. सो लायन इज पावरफुल. वाई? बिकॉज लायन हैज स्ट्रेंथ. सो एंड सो स्टेट इज पावरफुल बिकॉज दैट हैज स्ट्रेंथ. बट नाउ डेफिनेशन ऑफ पावर हैज चेंज्ड. नाउ नॉलेज इज सेड टू बी पावर. इंटेलेक्चुअल पावर, राइटर्स आर वेरी पावरफुल. किसी ने कोटेशन लिख दिया तो वो बहुत पावरफुल माना जाता है. तो चीजें क्या हो रही है? पावर का डेफिनेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इंडिया में ही देख लो, सबसे पहले पावरफुल कौन माने जाते थे? जो एकदम जिनके पास में लीगल पावर है, इंस्टीट्यूशन इनके हाथ में है. लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो अब पंचायत के मुखिया के पास में भी पावर है. तो पहले पावर टॉप में था, धीरे 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 आते कहाँ गया? लोगों के हाथ में पावर आ रहा है. और ये इवोल्यूशन में और बढ़ने वाला है. धीरे धीरे लोग और ज़्यादा पावरफुल होते आ रहे हैं. सो इवोल्यूशन के टर्म्स में ऐसे को हम कर सकते हैं. लेट अस टेक थर्ड अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक. फर्स्ट पावर को डिफाइन करो इंडिविजुअल लेवल पे. फिर फैमिली में पावर क्या है, गांव में पावर क्या है, सोसाइटी में पावर क्या है, नेशन में पावर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे पावर की क्या डेफिनेशन है. बहुत अच्छे से इसको हम क्या कर सकते हैं? उस एंगल से भी कर सकते हैं. और किस अप्रोच से इसको हम कर सकते हैं? वी कैन अप्रोच दिस फ्रॉम द मेथड विच आई टोल्ड यू अबाउट, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस. Some people believe that strength is source of power. इसको काउंटर करो. No, this is wrong. Only strength is not source of power. Even knowledge is source of power. हम इसको ये कर सकते हैं. एक और अप्रोच से इसको हम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. सो सोशोलॉजिकल स्कूल क्या बोलेंगे इसके अंदर? मार्क्सिस्ट क्या बोलेंगे पावर के बारे में? मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग कौन पावरफुल है? जिसके पास में पैसा है वो क्या है? पावरफुल है. लिबरल्स पावर की डेफिनेशन कुछ और देंगे. लॉ जिनको पावर देता है वो पावरफुल देंगे. फेमिनिस्ट क्या बोलेंगे? दिस ऑल पावर डेफिनेशंस आर क्रिएटेड बाय मेल्स ओनली. सो इन दिस वे आल्सो वी कैन सॉल्व दिस एसे. So we can solve this essay by almost all the approaches, different approaches which I have told you. And even if you apply some more approach, then this can be solved. So let us solve this question from that our approach in which I told you to solve any essay from microscopic to macroscopic level. All right. So first we will write introduction. Let us see the introduction. So I have started this question with a quotation by Lord Acton. What did he say? Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Lord Acton. And I told you that if we are using any kind of quotation, then that quotation must be answered in our subsequent paragraph. Let us read the introduction which I have made. Power is a multidimensional concept and different scholars define it differently. Traditional concept of power means strength, which gives you the strength to dominate others. From this traditional definition, lion draws power in a jungle. However, with time, power became an evolved concept. For Machiavelli, power is politics and politics is power. For capitalists, wealth is source of power. Socialists have given class definition of power and they have taken much interest in the concept of social empowerment. For a person like Socrates, knowledge is power, which also appears to be true
contemporary knowledge economy of India. Max Weber has defined how legitimate power is different from authoritarian power. Gandhi believes in oceanic theory of power, where power is distributed evenly. According to modern theories, power is located everywhere. It's like a blood which flows in the veins of society. Power is everywhere, and so is the responsibility attached with power. So, in this definition of power, in this introduction of power, what I have done, I have simply seen power, I have simply analyzed power from different perspective. अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमने क्या किया, पावर को डिफाइन किया है. ट्रेडिशनल डेफिनेशन, कॉन्टेम्परेरी डेफिनेशन, सोशलिस्ट, गांधीयन, एंड at the last I have also written what, that we are going to see how power is attached with responsibility. So I have set the tone of debate. What is tone of debate? Tone of debate is that power has multiple definition. Power has multiple faces, but all the faces of power, even though अलग अलग power की definition है, but all the faces of power are attached with one thing that is called responsibility. यानी डिबेट का टोन एकदम सेट है, मल्टीपल फेसेस है, मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी है. और अब आने वाले सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में कोई पढ़ेगा इसको तो समझ में आएगा कि ये क्या बताने जा रहा है. ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ मल्टीपल फेसेस ऑफ पावर हैज स्ट्रिंग्स ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. ऑलराइट, लेट अस स्विच टू द सेकेंड पैराग्राफ. So I told you in salient features of essay that whenever you are writing an essay, there must be flow. एक flow होना चाहिए. फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ में कनेक्शन होना चाहिए. सेकेंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ में कनेक्शन होना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम से आपने क्या कर लिया है, जंप कर लिया है. So the first sentence which I have written is from the above discussion. So it shows that this paragraph is connected with the first paragraph. So let us read it. From above discussion, it seems to be very clear that power has multiple locations, sources and stakes, and so is the multiple responsibilities. We can scan the leaves of power right from an individual to the planet as whole. An individual enjoys power because he is master of his organs and senses. He controls all the senses and manifests different behaviors accordingly. Since he commands his all senses, he has responsibilities of self-control. If he fails to control his passion, the consequences might be bad for his entire body and society as well. As per Guna dynamics, a man has three components: Satvik, Rajas, Tamas. There should be a perfect proportion among the three. Satvik should control the passion of Rajas and darkness of Tamas. In other words, the Satvik component has a bigger responsibility of controlling the others too. Else, consequences could be catastrophic. So in this first paragraph, what I told you in the starting, that we are going to solve this question from microscopic to macroscopic level. So the very first unit which we have taken here is what individual. एक individual के लिए power का मतलब क्या है, उसको हमने यहाँ पर लिया है. So by connecting this paragraph with my previous paragraph, I have discussed what is the meaning of power for an individual. एक individual भी powerful है. क्यों powerful है? Because he controls his senses. Here I have brought Guna dynamics from Hinduism, but you have liberty to bring other. For example, individual को discuss करने के लिए हम यहाँ पर स्वराज को भी ला सकते थे. स्वराज means self rule, rule on yourself. यहाँ पर हम psychology को भी ला सकते थे. किसी तरह से individual किस तरह से अपने senses पे command करता है, how he controls his anger, how he controls his emotions, that you are supposed to write here. So a person is powerful at individual level also, and that is why he also has a responsibility. तो उसके पास पावर है अपने हाथ को कमांड करने का,
पर हाथ कहीं चलना नहीं चाहिए, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके पास पावर है कि वो अपनी जुबान से कुछ कह सकता है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो जुबान से दूसरों को हर्ट जो है वो नहीं करे। ऑलराइट, सो इन दिस वे first we set the tone of debate that power has multiple faces, multiple responsibility, and the first phase, the first stake we have discussed, what is that? That power at individual level and the responsibility attached with power. Now this is third paragraph. After introduction, second paragraph. So the discussed man above interacts with other man, and there are formations of multiple institutions like family, caste, community, religion, village, nation, etc. As the size of community increases, the man assumes more power, which in turn requires more obligations and responsibilities. The father, in a way, commands absolute power over the family, especially in patriarchal society like India. He is a key decision maker within the four walls of a family. This puts very high pressure and responsibility on him. As per Ashram Dharma of Hinduism, he is expected to play the role of Grihastha Jivan, where he is expected to fulfill the obligations of family ethics. Father and mother command a well quantum of power over the family. This responsibility has a direct relation to the future of entire nation. In words of Abdul Kalam, mother, father, and teacher can only end corruption in the country. Family is the first school where a child learns all values of life, which makes him a responsible member of society and a responsible citizen of nation. Seeds of communalism, secularism, discrimination, harmony, hatred, and care all are born in a family. Hence, it is fair enough to conclude that the head of the family always enjoys power tied with a cord of responsibility that has far-reaching impacts on the society and the nation at large. So in this particular paragraph, you have to notice few things. First, by using the term the discussed man above, I have made sure that this paragraph is connected with the previous paragraph. The flow of the language is maintained. Number two, since I have limited words में लिखना है 2200 वर्ड पे तो लिखना नहीं है. लिमिटेड वर्ड में जब लिखना है तो पहला पावर कहाँ हो गया? इंडिविजुअल. दूसरा पावर जो है उसमें फैमिली है, सोसाइटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलीजन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जा रही है. अब यहाँ पर मैंने सिर्फ किसको उठाया है? फैमिली को उठाया है, बाकी को डिस्कस नहीं किया है. लेकिन बाकी का मैंने जो फॉर्मेशन शेप है उसको स्प्रिंकल कर दिया है. कहाँ पर? यहाँ पर. अब देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, विलेज, नेशन, एटसेट्रा. दिस मीन that this paragraph is dedicated only to family, but I have written about religion, caste and all because in subsequent paragraph I am going to write about religion, caste, family, etc. So the point I am trying to make here is that all the paragraphs should be connected with each other and central theme of essay should be visible in all the paragraph. So central theme को maintain करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने आपको क्या कहा है? ऐसे में आपको आइडिया से इधर भागना नहीं है. मतलब ऐसा नहीं लगे कि आपने फैमिली के बारे में लिखना चालू कर दिया. नहीं, आपने फैमिली के बारे में लिखा, फादर के बारे में लिखा, बट यू हैव मेंशन्ड दैट फादर हैज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑन द लिंकेज बिटवीन पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. Let us move to the third paragraph after this introduction. So it says, after family, the power hierarchy is enhanced with the bigger groups of interaction. A caste leader is quite influential in his caste group. In contemporary India, caste leaders are centers of discussion in various debates and issues like caste census, caste-based reservation, social movements, etc. However, the power is not unconditional and unaccountable. They have a huge responsibility in maintaining the Indian democracy. As Rajni Kothari has pointed out that Indian democracy has survived because of caste society. Caste leaders have immense responsibility for maintaining social harmony and brotherhood in the society.
Their sincere efforts can put a check against untouchability, caste discrimination, caste violence, honor killing, etc. Similarly, religious leaders have a big responsibility in the maintenance of peace and harmony in the society. Whenever religious leaders compromise with the responsibility, the nation pays the price. So in this particular paragraph, what are the things that have to be noticed? First, I have made one connecting term here, after family. That means the previous paragraph was given to family. After family, I am coming to this. Now in the same paragraph, I have discussed caste also and religion also, because of limitation of word. So it is not a good idea in this essay to give a separate paragraph for village, a separate paragraph for caste, a separate paragraph for religion, a separate paragraph for culture or community. Why? बिकॉज सबके जो आइडियाज है वो सेम आने वाले हैं. अगर आपने कास्ट को एक पैराग्राफ दे दिया, रिलीजन को दिया, तो आपको आप देखिएगा कि आपको लगेगा क्या कि आइडियाज दोनों में सेम आ रहे हैं, यानी कि कुछ नया फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है. एंड दैट विल मेक योर एसे मोनोटोनस, बोरिंग, यूनिडायमेंशनल, एंड दैट विल नॉट फेच यू गुड मार्क्स. So caste and religion, that I have discussed in this paragraph only. And again, to maintain the flow of language and to make this essay connected with the main theme, main topic, I have also discussed here power and responsibilities again. All right, let us move to our next paragraph. So till now, our discussion over power and responsibility has taken into account natural attributes. However, the diffusion of power has been much institutionalized in the legal, constitutional, and administrative framework. Here, the distribution of power is clear, precise, and well defined. For example, the Constitution of India has distributed power in 3 prominent verticals. However, the command over the power has never been absolute. Thoughts of our founding fathers seem to be in perfect sync with Lord Acton. They were apprehensive of the adversity of absolute power, and hence they inserted provisions of separation of power under Article 50 of Indian Constitution. This concept of division of power with accountability and responsibility can be seen in every inch of the system. For example, a district magistrate enjoys very wide power in his district. However, this power comes with responsibility. Accountability is fixed by putting DM under a matrix of power headed by Chief Secretary of the state. After DM, the power hierarchy rises, and so does responsibility. Supreme Court of India enjoys a vast pool of power, and one decision of apex court can impact the life of millions of Indians. Such a vast quantum of power puts immense constitutional and moral responsibilities over the apex court. The same holds true for powerful institutions like President, Prime Minister, CEC, CAG, etc. So you see here, अब यहाँ पर लोग गलती क्या करेंगे, जैसे लोगों ने फैमिली को डिस्कस किया, जैसे लोगों ने कास्ट रिलीजन को डिस्कस किया, अगर आपने ये गलती की कि चलो पहले एक पैराग्राफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देते हैं, एक पैराग्राफ हम दे देते हैं CAG को, एक पैराग्राफ हम दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, एक पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट को, सो हियर दैट विल बी अ ब्लंडर. Why? Because essay demands idea. So whatever quote that we are going to discuss about power and responsibility, that is applicable for all the legal and constitutional institutions like DM, President, Prime Minister, Supreme Court, CAG, CEC, and all. So it is better to give only one paragraph to all these institutions. It shows that you are not writing a monotonous essay. And एक पैराग्राफ में आपने बहुत सारे आइडियाज को क्या किया है, समराइज करके लिख किया है, क्योंकि सब्सटेंस जो है आइडिया का वो आपका सेम रहने वाला है. फाइन. और इस पैराग्राफ में और भी चीज आपको नोट करना है. व्हाट इज दैट आई हैव कोटेड हियर लॉर्ड एक्टन. व्हाई? रिकॉल द फर्स्ट क्लास आइडियल फीचर्स ऑफ एन essay. If you are using any quote, then that quote must be answered in your subsequent paragraph, and that is why Lord Acton को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, mention कर दिया है. And again you see this paragraph everywhere I have sprinkled power, responsibility, be it Supreme Court, be it Prime Minister, be it District Magistrate.
all have responsibilities, and the main theme of essay, with bigger power comes bigger responsibility. So as this power matrix is getting on above places, जैसे जैसे हायरार्की बढ़ रही है, पावर का क्वांटम बढ़ रहा है, responsibility भी बढ़ रही है, and that is why I have said that Supreme Court is very powerful, that it can impact life of millions of Indians, and that is why it has more responsibility in comparison to a district magistrate whose decision can impact a district. So now obviously after nation we will move to international forum, as we are moving from microscopic to macroscopic analysis. The equation of power reaches its highest form in global politics, where the concept of power is still dominated by the traditional understanding of power. In international relations, power is understood in terms of strength and domination. After the Second World War, US and former USSR emerged as two most powerful states, and hence it became their responsibility to put the world order in peaceful atmosphere. After the disintegration of USSR, US became the sole global power, and it was its responsibility to write the new world order. And therefore, it was always expected from USA to play the role of a responsible and benevolent hegemon. At present time, permanent members of United Nations Security Council assume ultimate power, and hence permanent members have responsibilities to resolve all global issues like Israel-Palestine conflict, Middle East crisis, South China conflict, nuclear arms race, terrorism, etc. Because of its size and population, India assumes a significant position in the power maze of South Asia, but this power position has attached strings of responsibilities. India intervened in East Pakistan and fulfilled its global duty of responsibility to protect. By declaration of Gujarat Doctrine, India fulfilled its responsibility of a benevolent big brother. COVID diplomacy of India is worth mentioning. Therefore, it appears true that even in global politics, more power comes with more responsibilities. So in this paragraph, what is the crux? The crux is that at global institutions, I have discussed contemporary issues also. So recall the first class of essay, ideal features of an ideal essay. You must bring contemporary relevance of your topic, contemporary happenings of your topic, and we have written all the contemporary happenings here. At the same time of responsibility, we have also mentioned our country, India, and how India played the role in which we are interested the topic. More power gives you more responsibility. So in South Asia, India is the biggest nation, and since with this big power, India assumed big responsibility, which it fulfilled in Bangladesh intervention, and which was also visible in the famous Gujarat Doctrine. So that's all, and now we will move to the concluding remarks. So what should be the concluding remarks? Concluding remarks should be summation of all the paragraphs that we have written. So our discussion on power and responsibility can be concluded by philosophy of Montesquieu. Montesquieu was well aware of the fact that concentration of power can be dangerous, as more power means more responsibility. Responsibility can be infused only by strings of accountability mechanisms, and therefore he suggested the concept of division of power. The same was point of disagreement between Plato and Aristotle. Lord Acton was also apprehensive of the adverse effects of absolute power, and so he wanted the powerful institutions as responsible and accountable institutions. Recall the class of conclusion. What should be a conclusion? It should be a concluding remarks. So it can be concluded. It should have link with the introduction. Why? Because you set the tone of debate. तो set of tone debate क्या था? लॉर्ड एक्टन को हमने क्या किया यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया, एंड पूरे के पूरे ऐसे का जो क्रक्स था, दैट बिगर पावर should always be attached with bigger responsibilities, that we have written here. All right. So this is how we have to write an essay. Now just let us see that ideal features of essay, whatever we have seen in the ideal features, in this particular essay,
all the features are coming or not. And so the first was as per demand of the question. So obviously we have written as per demand of the question because question is interested in what? Power and responsibility. Feature number 2, bring all stakeholders into picture. We have brought all the stakeholders from DM, family, PM, Supreme Court, US, Russia, India, all stakeholders into picture. Third, stick to your subject. So in all the paragraphs, 2 words are common, that is power and responsibility. Fourth essay should be multidimensional. So is our essay multidimensional? Obviously, we have written all the dimension. We have written essay from constitution angle also, legal angles also, sociological angle भी यहाँ पर आ रहा है, और जितने भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, फैमिली पावरफुल है, इंडिविजुअल पावरफुल है, ये सारे एंगल यहाँ पर जो है आ रहे हैं. सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑब्वियसली यहाँ पर हुआ है, हमने जहाँ से चीज़ों को स्टार्ट किया वहाँ पर ख़त्म किया है, और हर पैराग्राफ क्या है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दे रहा है. एक पैराग्राफ में हमने फैमिली को डिस्कस किया, ख़त्म किया. एक में हमने सोसाइटल कंपोनेंट को डिस्कस किया, हमने ख़त्म किया. एक में इंटरनेशनल को किया, हमने ख़त्म किया. सो एवरी पैराग्राफ इज गिविंग अ सेंस ऑफ कंप्लीशन. नेक्स्ट, quotation must be answered. So we have started this essay with Lord Acton and we have answered that quotation. All beliefs, doubts, apprehension must be answered. So यहाँ पर कोई डाउट था क्या? यहाँ डाउट था, एप्रीहेंशन तक. आप फर्स्ट पैराग्राफ को याद कीजिए. दैट पावर हैज़ डिफरेंट डेफिनेशन. मैकियावेली अलग बता रहा है, गांधी अलग बता रहे हैं, मार्क्स अलग बता रहे हैं. और हमने सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में क्या किया, देखा कि हर का इंटरप्रिटेशन अलग अलग जगह पे दिख रहा है. फैमिली में भी कुछ और है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ और है, फाइन, इंटरनेशनल में कुछ और है. बेस्ट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, दैट्स इट. इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल लैंग्वेज है, कोई भारी भरकम लैंग्वेज यहाँ पर जो इस्तेमाल नहीं हुआ है. जितने मैंने फिलोसफर्स यूज़ किए हैं, एक्टन की बात करें, गांधी की बात करें, सारे क्या है, वेल नोन फिलोसफर्स है. देन आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स एंड फिगर. फैक्ट्स एंड फिगर तो यहाँ पर है ही नहीं. दैट सो एंड सो पावरफुल इंस्टीट्यूशन, पावर इंडेक्स, इनकी बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. आइडिया पे हमने क्या किया है, इम्फेसिस क्या है, विद इन वर्ड लिमिट. दिस इज वेल विद इन लिमिट. आई गेस दिस इज 1200 समथिंग वर्ड्स. देन organization and presentation of ideas. So ideas have been arranged in a particular manner. एक पहले आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट किया, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, नेशन, इस तरह से हमको क्या है चले हैं. स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, यस क्रिएटिविटी है. कहाँ क्रिएटिविटी है, हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशन की पावर से आगे बढ़े हैं हम, कि जैसे केवल डीएम पावरफुल नहीं है, एक कास्ट का लीडर भी किया है, वो भी पावरफुल है. नॉलेज रखने वाला आदमी भी क्या, वो भी क्या है, पावरफुल है. टू मच जार्गन्स, बिल्कुल जार्गन्स ऐसे में आपको कहीं दिखाई नहीं देगा. बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स, बहुत फैक्ट डेटा बिल्कुल नहीं है. डिफाइन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, इस ऐसे में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हमने यूज ही नहीं किया है जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े. एक जगह हमने इसको डिफाइन किया है, गुना डायनेमिक्स. सो गुना डायनेमिक्स कई लोगों को समझ में शायद ना आए. सो आई हैव डिफाइंड व्हाट इज गुना डायनेमिक्स, व्हाट इज राजस, तामस, सात्विक का एक ब्रीफ आइडिया वहाँ पर दिया है. आश्रम धर्म को मैंने कोट किया, तो आश्रम धर्म को भी थोड़ा डिफाइन किया है वहाँ पर, क्या आश्रम धर्म है. Then equal and meaningful paragraph that we have taken. Chronological in terms of evolution, वो भी इसका हमने क्या रखा है, ध्यान रखा है. Then connecting paragraph, सारे paragraph क्या connected है. Additionally till now from our discussion, from above, expert opinion, बहुत सारे experts वहाँ पर लिए हमने. गांधी को लिया, लॉर्ड एक्टन को हमने यहाँ पर लिया है, प्लेटो, अरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, बहुत सारे इसको लिया है. बैलेंस सॉल्यूशन एंड अप्रोच, इसको हमने बैलेंस रखा है. वी आर नॉट सेइंग कि केवल जो लीगल इंस्टीट्यूशन है वही पावरफुल है, हम ये भी नहीं कह रहे सोसाइटी पावरफुल है. सब जगह पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस, ऑब्वियसली वी हैव रिटन लॉट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस. वी हैव डिस्कस्ड हियर कास्ट सेंसस, कास्ट रिजर्वेशन पॉलिटिक्स. वी हैव डिस्कस्ड हियर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्टेम्प्रेरी इशू. सो दिस वे we can discuss essay, we can write essay, and that is the meaning of an ideal essay. Now in the subsequent classes, in the next classes, we will deal with specifically philosophical based essays. Thank you.